हेलो YouTube, वेलकम टू डॉक्टर वाइब्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसका नाम है ESWL। सो व्हाट डज ESWL स्टैंड फॉर? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव lithotripsy। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, that means it is done outside the body. Shock waves, that is vibratory waves, are used, and lithotripsy, litho मतलब stone and tripsy मतलब breakdown. So it is a procedure that is done outside the body, through outside the body, in an attempt to fragment or break the stones. What is the principle of ESWL? So basically एक source होता है which is external to the patient's body. That source will generate shock waves. That shock waves will be transmitted to the patient body and will focus on breaking the stone and the fragmentation. So basically, I'm reading it out. A source is present external to the body of the patient that will generate shock wave. These shock wave will be transmitted through the body with an attempt to break the stone and leading to its fragmentation. तो इस पूरे सेटअप का वो जो मशीन होती है जो बाहर में होता है वो सोर्स का कुछ कंपोनेंट्स होता है. So first is the shock wave generator. There are many types of shock wave generator. One, it can be electrohydraulic. Second, it can be electromagnetic. And third, it can be piezoelectric. Okay. Next component of this system is the imaging system, because you have to localize where the stone is present and you have to monitor the entire process. तो इमेजिंग सिस्टम के लिए हम लोग के पास फ्लोरोस्कोपी होता है, हम लोग के पास USG होता है, एंड दे कैन बी फ्लोरोस्कोपी प्लस USG. सो व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी? फ्लोरोस्कोपी इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एक्सरेज, मतलब बहुत सारे एक्सरे प्लेट एक के बाद एक. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर? द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट बाहर से शॉक वेव्स आता है, वो स्टोन को फ्रैगमेंट कर देता है. स्टोन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स इन पीसेस में ब्रेक हो जाता है और वो यूरेटर से बाहर निकल जाता है, फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरेथ्रा एंड आउटसाइड द बॉडी. सो जो पूरा पाथवे होता है यूरेटर में, इट अपीयर्स एज इफ देयर इज अ स्ट्रीट ऑफ स्टोन्स, एक के बाद एक स्टोन्स. सो देयर इज अ जर्मन वर्ड फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीनस्टैरे. ओके, तो बेसिकली पूरे पाथवे में एक स्ट्रीट ऑफ स्टोन्स बन जाता है, एंड दैट यू कैन सी इन द इमेज दैट आई हैव ड्रॉन ऑन द राइट. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द इंडिकेशंस. तो इस प्रोसेस का इंडिकेशंस क्या है? ऑब्वियसली टू रिमूव द रेनल स्टोन्स, लेकिन सारे रेनल स्टोन्स को तो रिमूव कर नहीं सकते. सो यू कैन रिमूव दोज रेनल स्टोन्स whose size is less than equal to 1 centimeter, because small stones को ही ब्रेक किया जा सकता है और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को ही बॉडी से बाहर इस तरीके से निकाला जा सकता है. राइट, नाउ यू हैव टू नो व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ESWL. First, it is pregnancy. Second, bleeding diathesis. Third, untreated UTI. Fourth, if there is a renal or aortic aneurysm. Fifth, there can be obstruction that is distal to the stone. And seventh, there can be some skeletal malformations. ये सारे points होने से it is highly contraindicated to do this procedure. Now, what are the adverse effects? There can be acute or chronic renal damage, and there can be extrarenal damage to the surrounding organs. Right. Now we will see what are the factors that predict the poor ESWL success. First is the stone composition. तो अगर स्टोन सिस्टीन का हुआ या फिर इंदिनवीर का हुआ, then it is highly difficult to perform this procedure. Second, stone attenuation if it is more than 1000 HU. Third, if the skin to stone distance is large, more than 10 centimeter, क्योंकि अल्टीमेटली तो शॉक वेव्स ही जा रहा है ना, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना वर्क इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. एंड फोर्थ, if there is some renal anatomical abnormalities, for example, if it is a horseshoe kidney, or if there is a diverticulum in the calyces, or if there is unfavorable lower polypectomy.
So these are certain conditions जिसमें ESWL एक poor success rate की तरफ जाता है. So we discussed the full form of ESWL, extra corporeal shock waves lithotripsy. We discussed the principles. उस machine के क्या components होते हैं, that is imaging and shock wave generator. We discussed the complication, that is stress. We discussed the indications, the contraindications and factors.